Morning students, welcome to social science class. Today we will do the revolutionary movements for India's independence. It means the actions that were taken by the revolutionaries for the freedom of our country. We have already read about the work or the actions of Mahatma Gandhi and other prominent leaders like Jawaharlal Nehru, Motilal Nehru. Okay, so they followed non-violence. They protest against Britishers. They give petitions. They do discussions to solve our problem. But no result was seen by the revolutionaries. So they just want to do some strict actions against Britishers. In every state or in every country, even in every house, there are many types of persons, those have different thinking. So in our country also, there are some people, those were working calmly and with patience that Britishers would work for them. But there are some other people, those were radical minded, and they believed that Britishers would never give the freedom without एक्शन. जब तक उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा. दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ द पर्सन्स ऑफ रेडिकल माइंड. वी can call them extremists or radicals or revolutionaries. Okay, so they wanted to do some action, and for that they need weapons to protest or to revolt against Britishers, and to buy weapons they need finance or money, right? So the question is that from where they got the money. So they decided to do robbery, to loot the government train. और उस गवर्नमेंट ट्रेन में जो रेवेन्यू था कलेक्ट करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहा था. ओके, सो दे जस्ट डिसाइडेड टू लूट दैट गवर्नमेंट ट्रेन and take the cash from it. Okay, and this incident was known as काकोरी कॉन्स्पिरेसी. इस मूवमेंट को, इस इंसिडेंट को काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है. वाई इट इज़ कॉल्ड काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? बिकॉज इट वॉज डन एट द प्लेस ऑफ काकोरी. काकोरी नाम के प्लेस पर यह वर्क किया गया था. ओके, एंड द पीपल वर द मेंबर ऑफ हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. इसके लोग थे जिन्होंने मिलकर, ये एसोसिएशन थी, इसके मेंबर्स ने मिलकर ये रॉबरी प्लान की थी. ओके, एंड द मेन वर राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला एंड मैनी मोर. It was a well-known act, and it showed that the people of our country were brave and they can do anything for their country. Okay, many of them were arrested and tried in the Kakori conspiracy case.
बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया और उन पर केसेस स्टार्ट किए गए कि उन्होंने इस रॉबरी में हेल्प की थी। ओके, नेक्स्ट इज जुगांतर पार्टी वॉज स्टार्टेड बाय अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष ने जुगांतर पार्टी स्टार्ट की at the time of First World War, and he planned an armed revolt against the British. He thought that Britishers were just busy in World War, so we can do a revolt and get our independence. ओके, तो वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? इन 1914। द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड इट एंडेड इन 1918। तो इस टाइम पीरियड में अरबिंदो घोष ने जुगांतर पार्टी स्टार्ट की एंड ही प्लान्ड एन आर्म्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, एंड इन 1928 in Lahore, Bhagat Singh, Azad and Rajguru assassinated Police Commissioner Sanders. And why they did so? Because when Simon Commission came to India, it was boycotted by the people of our country in every part of our कंट्री। हर पार्ट में हमारी कंट्री के लोगों ने उसे बायकॉट किया था, राइट। एंड इन लाहौर लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग द मूव व्हेन दे वर बायकॉटिंग साइमन कमीशन। एंड व्हाई दे boycotted Simon Commission? Because there was no Indian representative in the Simon Commission. Okay, so that is the main reason that the leaders boycotted Simon Commission. And in Lahore, police lathi charged on the people, those who were protesting against Simon Commission. And in this lathi charge, Lala Lajpat Rai was killed, right? Remember that? तो जो इंचार्ज था जिसके अंडर ये लाठी चार्ज किया गया, द इंचार्ज वॉज सांड्रस। एंड टू टेक रिवेंज ऑफ लाला लाजपत राय's डेथ, भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु किल्ड पुलिस कमिश्नर सांड्रस, ठीक है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ। क्लियर? एंड आफ्टर दैट Bhagat Singh threw a bomb in the Legislative Assembly to show their power, that Indian youth is powerful, it can do anything for its country, its motherland. Okay, so they threw a bomb in the assembly. Their intention was not to kill anyone. किसी को मारना नहीं चाहते थे वो सिर्फ अपनी पावर को शो करना चाहते थे। दैट इज द मेन रीजन। ओके, सो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू द बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नाउ they were arrested and Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru were hanged to death in 1931 in Lahore. लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या किया गया? हैंग कर दिया गया। ओके, okay, so some other revolutionary groups were also emerged there, established in our country. These were India House, Gadar Party and Berlin Party. India House started by Madan Lal Dhingra, Gadar Party
started by Lala Hardyal, and Berlin Party by Virendranath Chattopadhyay. Okay, so some other revolutionary groups were started by these people to aware Indians about their rights or to revolt against Britishers. After the withdrawal of civil disobedience movement, Gandhi ji withdrew from active politics. गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर आ चुके थे. अब वो पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं थे. नाउ ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एक्टिवली. He was just giving his ideas but not involving in any activity. Okay. He started working for the lower caste or for the depressed people. ठीक, for हरिजन्स. हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं सोसाइटी को चेंज करूं, तभी हमारी कंट्री में कुछ चेंजेस आ सकेंगे. सो ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द सोसाइटी, ओके, एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स. So these are the actions taken by the revolutionaries of our country, and I think without them it is difficult to take independence from Britishers. महात्मा गांधी और अदर प्रोमिनेंट लीडर्स का तो प्रॉपर एक पार्टिसिपेशन था हमारी इंडिपेंडेंस को लेने में. उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है. बट द वर्क ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज was also important. So this is about the revolutionary movements in our Indian independence struggle. There are many more, but only this is included in your book. So just read these. It is very much important topic. So read about all these properly. Thank you and have a nice day.